Assalamu alaikum. My name is Roshane Zafar. You're watching the curtain raiser for Kuch Ankahi on Something Hot. The show is going to be launching this weekend on ARY. I hope you'll watch it. Assalamu alaikum. This is Amna. You're watching Something Hot, and this is Hot Talk. मेरी आज की मेहमान is someone extremely special. She empowers women. She started her career with the Kashf Foundation back in the 90s, and she's a development activist who actually taught women in Pakistan the importance of economic empowerment. ये उनका काम था डेवलपमेंट सेक्टर के साथ जो कि कई सालों से वो कर रही हैं एंड शी इज़ वन न्यूमरस अवार्ड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड शी इज़ रिकग्नाइज्ड फॉर हर वर्क इन पाकिस्तान लेकिन हमारे साथ उनकी एसोसिएशन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ ऑफ कोर्स शी हैज़ अ बैकग्राउंड इन एंटरटेनमेंट एज वेल थ्रू हर फैमिली विल टॉक अबाउट दैट but she's made a series of very, very important dramas that brought women in the limelight. Not the way women are portrayed on the average Pakistani drama, but with a sense of hope and empowerment and strength and progression. ड्रामे उनके आपने देखे हैं, आप सबने अप्रिशिएट किए हैं और उनका एक आने वाला ड्रामा है जिनकी वजह से हम उनके साथ आज बैठे हैं, उनके साथ बात करेंगे. So much to talk about. I'd like to welcome Roshane Zafar. Roshane, it was a difficult introduction because there's such a vast body of work and there's so much achievement and एक तो thank you for everything you do for women in Pakistan. Thank you, Amna. It's great to be here. और आपकी मैं इंट्रोडक्शंस सुन रही थी तो मैं अपनी सीट में और भी सुकड़ रही थी. नहीं अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं कुछ है. ज्यादा ही हो गया. मैंने कुछ कहा ही नहीं है. आपको पता है इतनी अजीब बात है कि आपकी पहली याद जो मेरे लिए है ना वो ईद ट्रांसमिशन पीटीवी और फलक पे कैसा ये चांद निकला. I know the one song wonder. The one no, but it was such a fabulous song. And you have music in your heritage as well, in your lineage, of course. I mean, that's right. Like Apokraj and all of that. तो वो एक ये बात तो तय है कि आप एक बहुत ही literary और एक बहुत ही well read और intellectual background से हैं. जो कि नजर आता है because the way that you've intertwined your development work with Pakistani dramas. किसी और ने तो नहीं किया. और आपने जो किया वो कहाँ से जज्बा आ रहा था? Amna, it's about storytelling. While you are working in the field with women, you hear so many stories and you hear about their lives and their hopes and their fears. कि जब तक आप उसकी अक्कासी ना करें, उसको समझें ना, उसके पीछे ना जाएं, आप कोई development intervention भी नहीं design कर सकते. Right. So I think a lot of it came from the time I've been spending in the field, and I've been one of the lucky Pakistanis who has traveled the length and breadth of the country and sat with people and women in particular to learn about them and their lives. So वो stories craft करना वो तो and when you're trying to empower people आप कैसे करेंगे? आप role models create करेंगे तो वो storytelling तो इस पूरे process का बहुत important हिस्सा रहा है. और मेरे लिए in fact of course because as you said I came from a family where music was part of our lives. Absolutely. And and that there's an analytic side and intellectual side but then there's also an art and culture and literature side which changes mindsets. आपको नहीं लगता एक चीज दूसरे के बगैर हो ही नहीं सकती? बिल्कुल नहीं हो सकती है ना? जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर आप एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की भी बात करते हैं जब तक आप उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं डालेंगे जब तक आप उसमें चेंज नहीं डालेंगे माइंडसेट चेंज नहीं डालेंगे तो वो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ नहीं आएगा. वो ट्रांजैक्शन तक रहेगा कि जी अच्छा मैंने पैसा लिया कारोबार शुरू किया और बस वहाँ ही खत्म हो गया. लेकिन अगर आपने नेक्स्ट जनरेशन को चेंज करना है तो वो तो ऐसी ही ट्रांसफॉर्मेशनल एक्टिविटी से आएगा. रोशान आपने जैसे खुद ही कहा कि यू वर्क विद वुमेन अक्रॉस द कंट्री एंड इन ऑल सेक्टर्स. आपको क्या लगता है टेलीविजन का क्या इन्फ्लुएंस है? देखिए मीडिया एंड दैट्स हाउ आई केम एट इट. आप मुझसे पूछ रही थी आप कैसे इसमें आई. बिल्कुल. तो एक तो वो था जो मैं व्हाट आई वाज सीइंग इन रियलिटी व्हाट्स हैपनिंग ऑन द ग्राउंड. द अदर वाज व्हाट आर वी सीइंग व्हाट इज मीडिया डूइंग इन टर्म्स ऑफ changing those aspects for women. और एक चीज जो मुझे constantly नजर आती थी that's the घुटन and the suffocation that women face in this society. बिल्कुल. Because they just don't have voice. So what are we showing on media? We're basically showing women as victims. They're circumstantially tied to what society wants them to do. And gender roles are so conservative in the way they're portrayed
that we normalize them. We बिल्कुल normalize the fact that it's okay to hit your spouse. It's fine. I mean, अगर हम उसको screen पे लेकर आ रहे हैं, या it's okay to cheat on her, अगर हम ये screen पे लेकर आ रहे हैं, तो after a while we get used to it. तो बिल्कुल ये मेरे लिए, I mean, this was where I was, you know, I would see these plays and I would say कि अच्छा इसका मैसेज तो जा रहा है लोगों को, लेकिन उसको कहाँ तक उसका इम्पैक्ट हो रहा है on our attitudes. So that's how I got into it. And another reason was that, as I was saying to you, when we started Kashf, we've been using social theatre as a way of changing mindsets. जी So वो भी एक तजर्बा था to go into communities and talk to them about child marriage, about immunization. पहला ड्रामा जो था आपका नहीं, उससे पहले जब हमने कश्फ भी शुरू किया था, तो theatre is part of the Right. community mobilization बिल्कुल that we do. So it's easier to tell a story and people can relate to it, rather than saying, okay, you change your attitude about so and so, or you send your daughter to school because that's a good thing for you. So you show a story and you let them reflect on it. So बिल्कुल we've been doing that for a long time. So ये practice जो था, ये वहाँ से भी आ रहा था. और जो आपने सब्जेक्ट्स उठाए in all 4 dramas अभी तक जो हुए हैं, वो they came from a very real space, right? You were जी. seeing this happening in our society. Ji. So these were real stories. They were based on real facts. In fact, some stories were so horrific we couldn't even show them. We had to sugarcoat them. कभी-कभी fiction is actually more unbelievable. जी. More believable than the non-fiction, reality. So, for example, Udari ki jo story thi, it was not the stepfather, it was the father. So we had to, of course, we couldn't show that, and it's a real story. And so we couldn't show that. नहीं दिखा सकते नहीं देखो कैसे देखें, वो तो बड़ा मुश्किल होता. इतना पहले ही हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की बात कर रहे थे. You wanted the issue out there. You didn't want to ruffle so many feathers that people would react to. You pick and choose your battles, You have to right? pick and choose your battles. So the battle was not who the perpetrator was. The battle was that it's from someone from within the house. And also that the child was being abused. Yes. And we needed to talk about that. And how it's not the child's fault, because that's what society does. I mean, even a rape victim is seen as, she's seen as not a victim per se, but someone who's egging and abetting the issue. So वो तो हमने उसको चेंज करना था. So इसलिए आपको कई बार शुगर कोट करना पड़ता है इन चीजों को, but you must not dilute your message. Right. आखिरी स्टेशन लोगों को लगा कि जैसे शायद बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग और डार्क हो गया था, मगर उसमें भी आपका ख्याल है होप था? जी देखिए, एंड में सब हर एक जो है वो ये बताते हैं कि मैं कैसी दुनिया का तसव्वुर कर रही हूँ जहाँ पे सब औरतें जो हैं वो अपनी एम्पावर्ड हों और वो अपने फैसले खुद से कर सकें. सो वो आपने दिखाया टू सम एक्सटेंट. देखिए ये रियलिटी है. दिस हैपेंस एवरी डे एज वी स्पीक. Maybe a child is getting abused, or unfortunately, or a woman is a victim of sexual violence. So ये तो reality है. वो हमारा एक experiment था, to be, if we come to that project, it's my favorite project, by the way. It was an experiment because it was 7 different stories, and usually it's a serial that works better. But we wanted to pick these. We wanted to bring these to and many of these stories were picked up later also. The ideas were picked out of Aakhri Station as well. So, for example, mental health of women. We don't talk about it really, and we felt that was one of the very important messages we left with Aakhri Station. And then, of course, the other thing is rural to urban migration. हम कभी भी इसकी बात नहीं करते. Then IDPs, internally displaced people. We talk about this as a statistic, but we don't talk about it from the human angle and from the women's angle. So to me, as a development activist, that is the project that's closest to my heart. But of course, it was, as I said, an experiment, and we wanted to see. Bits of it got through to audiences, and we got a lot of acclaim for it. The drama serials have been, again, an experiment. And this one that you're going to be seeing is a 180-degree move. So, okay, coming from Dil Na Umeed To Nahi to Kuch Ankahi, I mean, it's a complete vibe shift, right? जी. बिल्कुल, completely. वो बहुत serious issue था, of course. Sex trafficking and women who are being exploited, and it was so vast, but there was a little bit of everything. And people watched it, and it picked up awards as well. So congratulations on that. Thank you. And we personally loved it because the storytelling was so engaging. I mean, कोई भी character ऐसा नहीं था जिसके साथ आप connect नहीं करते. मगर उस वक्त भी हमारी बात हुई थी और आपने कहा था कि अब अगला जो होगा ना project, it's going to be a little lighter. A serious subject, but a little lighter. और फिर कुछ अनकही जब announce हुआ, तो वो तो it kind of blew it out of the park, and everybody's like super excited. It's starting this weekend.
and again a progressive take on how we perceive women जी and their issues. जी सो उसमें पहले तो आमना मैं ये कहना चाहूँगी ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं ये अकेला इंसान तो कोई नहीं कर सकता. दिस इज अ ग्रुप, अ टीम, अ होल क्रिएटिव process. बिल्कुल. So I really need to thank all the people, Maniza Appa in particular, Maniza Hashmi. She's been my, lodestar in all of this. Unke baghair, I mean, I'm not a media person, but like I said, I like telling stories. So she's the one who's been, behind all of this. So we had been talking a long time about moving away from that particular genre of something hitting you in the gut-wrenching drama, basically. Gut-wrenching drama. उससे हट के हम चाह रहे थे. और हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही थी हसीना आपा से, हसीना मोइन आपा से, और उनसे हम 2-3 साल से ये बात कर रहे थे कि लेट्स सिट डाउन, लेट्स थिंक अबाउट दिस, लेट्स रिवाइव मज़ाहिया, ये जॉनरा जिसमें कॉमेडी भी हो लेकिन एक सीरियस मैसेज अंडरटोन भी हो और रोमांस भी हो. तो शी इज ऑफ कोर्स शी वाज मास्टर ऑफ दैट ना, उनकी तो कोई comparison ही नहीं. There's no competition, and with her gone, there was just such emptiness for us कि अब क्या करें. तो ये conversation उनके साथ हो रही थी, and we were going to craft the plot and the story and then come up with the concept. Unfortunately, in all of this, we lost her. So then we were like, what should we do? So we all put our heads down together and we said, okay, let's go through in the past 15 years, क्या हमारा comedy का क्या version रहा है पाकिस्तान में. So I went and I looked at a lot of these drama serials, I must say, and I looked at the script because मेरे लिए तो सबसे important dialogue script और वो सारा कुछ था. And then we shortlisted a few people and then we talked to them. And somehow with Muhammad Ahmed Saab, we just clicked. It was just love at first sight. And he and the thing is that his story in his life, he also has daughters only. So he understood the nuances कि हम करना क्या चाह रहे हैं. And he's written comedy as well. And he's written comedy, of course. That was the reason why we spoke to him, because of his experience of writing comedy. And it just worked for us. And that's how we came, the concept. Then we worked on the concept. We put it all together. Plot likha jo one liner hota hai, and then we started writing the play. इसमें एक फर्क था. पहले ये होता था कि हम सारी स्क्रिप्ट पहले लिख लेते थे और वो बन जाती थी और फिर हम ड्रामे की प्रोडक्शन में आते थे. इस बार we actually were writing as we were along shooting. the way. Achha. Yes, so this was very different. This was something that we haven't done before. But so there were ऐसा many. क्यों हुआ? ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि हमारे we wanted the director to be involved as well. So नदीम को भी हमने बहुत पहले involve कर लिया. उस जब हम अहमद साहब को से बातचीत कर रहे थे तो we were also thinking which director can deliver what we want. And as I had said, we had been doing the research, so Nadeem's name kept coming up. And again, when we talked to him, it all came together. So वो जब हमने बैठकर हमने कोई 10-12 किस्तें लिख ली हुई थी जब नदीम इन्वॉल्व हुए. तो फिर काफ़ी चीज़ें हमें रीडू भी करनी पड़ी इस प्रोसेस में, उनका इनपुट भी लिया. So like I said, this is all teamwork. It may be produced by an entity, but everybody involved in this was really so important. And we'll come to this later, but it's also interesting how different channels are picking up different projects of yours. ऐसा नहीं कि आप एक channel के साथ affiliated हैं और ये हो कि जी सारे आपने दुखती रग पे हाथ आएंगे उसमें भी आएंगे, मैं भूल ना जाऊं. But हाँ, so कुछ अनकही, so passion project, right? तो इसका क्या है? What is the core of this story? So it's a story that you see in every house in Pakistan. Basically, मियाँ बीवी हैं, माँ की सोच बड़ी फर्क है, बाप की सोच बड़ी फर्क है अपनी बेटियों के हवाले से. बाप played by Muhammad Ahmed himself. And wife played by so he was saying to me the other day, ये मैंने आइंदा कभी नहीं करना कि मैं स्क्रिप्ट भी लिखूं, स्क्रीन प्ले भी लिखूं और फिर एक्ट भी करूं. बड़ा टास्क है. बहुत टास्क है. And then he was laughing when once I saw him जब प्रोडक्शन हो रही थी, and he was laughing and he said कि देखो मुझे इतनी शर्मिंदगी होती है कि मैं अपने ही डायलॉग लिखे हुए डायलॉग भूल गया हूँ. Cute. So it was in that sense the concept is very simple. It's an everyday life story. मियाँ बीवी हैं, उनकी आपस में नजरिया फर्क है, 3 बेटियां हैं. माँ चाहती है उनकी शादी हो, बाप ने उनको वो चाहता है कि they should make their own choices and have their own goals in life and decide for themselves. Right. So he is giving them space to develop. And she has that typical notion कि बस अब इनकी तो शादी करो. इरसा गजल. जी, and she's done a fabulous job. She's such a good actor. बिल्कुल.
तो यहाँ तक तो कहानी वही लगती है जो हम हर तीसरे ड्रामा में भी देखते हैं कि एक घर है, बेटियां हैं, उनकी शादी करनी है, लेकिन अमूमन यहाँ से फिर रोना धोना शुरू हो जाता है कि एक बेटी की शादी की, वो खुश नहीं है, जहेज आ गया, डोमेस्टिक वायलेंस आ गई, हर किस्म की रिग्रेशन आ गई। यहाँ से आपकी कहानी बेहतरी की तरफ जाएगी जी, उम्मीद हमारी है। कहानी बहुत फर्क है जी क्योंकि ये हमने एम्पावरमेंट की बात की, तो बिल्कुल। इट्स अबाउट सेल्फ एम्पावरमेंट, इट्स अबाउट द जर्नी ऑफ फाइंडिंग योरसेल्फ। हम्म, सो ये तीनों लड़कियां जो हैं ये बिल्कुल फर्क है और ये हर घर में होता है, हम्म। जरूरी नहीं है कि बहन भाई एक जैसे And हों। तीनों बेटियां प्ले, the eldest is Mira Sethi as who? Samya, Samya. and then of course our wonderful Sajal Ali. Sajal I'm Ali. so excited to have be working with Yes, her. I'd yes, always wanted to. She's such a fabulous actor. she is, She is undoubtedly. playing Alia, Hmm. and then the youngest one is Kutsia, Hmm. who is playing Tanya. Tanya, right. So वो तीनों फर्क हैं, Hmm. उनकी पर्सनालिटीज भी बहुत फर्क हैं और उनकी जर्नीज जो हैं वो भी बहुत फर्क होंगी। Hmm. तो यस, स्टोरी आपको टिपिकल लगेगी, इसमें कोई आपको इतना ज्यादा वो डेप्थ नहीं नजर आएगा, बट इट्स वेरी नुआंस्ड। Yeah. बिकॉज इसमें द ओल्ड माइंडसेट वर्सेस द न्यू माइंडसेट भी है। जैसे आई वाज मेंशनिंग दैट वी टुक सम पार्ट्स ऑफ इट फ्रॉम प्राइड एंड प्रेजुडिस, एंड जी। इमीडिएटली लोग कहते हैं वो मिस्टर Darcy. डार्सी कौन है? और माय आंसर टू दैट इज एवरी मैन हैज अ मिस्टर डार्सी इन देमसेल्व्स, हाँ, बिकॉज they have to find themselves बिल्कुल। in relation to the other gender. Hmm. So that is the Mr. Darcy in the play कि जो it's about attitude change. So many of the male characters Hmm. will go through a process of change, a Right. journey of understanding how they relate to women in Hmm. society. And of course, we see Bilal Abbas Khan coming Oh in then yes, of as course. Sajal's love interest We don't on know. screen. We'll have to see. अब इतना तो teaser से हमें पता चल ही गया, and people are really looking forward to this pairing because Yes. हमने उनको फिल्म में भी देखा पिछले साल, जी। मगर उससे पहले टेलीविजन पे बिदो जी। रंगरेज़ा, they had fantastic chemistry, They do. and they're both such good actors. They are. Bilal and Sajal Yeah. both. And such wonderful human beings. I mean, I was so impressed when they, Hmm. I mean, they really felt for the project and the Hmm. idea behind it, and they've really done their best. Right. Yeah. Right. So yeah, a lot to look forward to. But again, you were telling me what is the issue, the core issue that you've addressed? You were So talking it's about gender roles, it's about discrimination, One. it's about opportunities, career opportunities for women, Right. and how society looks at them. Right. It's about life choices, actually. Life choices that women make or Roshani, are allowed to make. You mentioned inheritance law. It's about inheritance also, and then there are things there's subtext also, because हर हमारे शो में आपको subtext नजर आएगा, body shaming के ऊपर भी बात होती है, sexual harassment के ऊपर भी बात होती है, the way we look at and treat minorities in our society. So हमने stereotype नहीं किया किसी को भी इसमें। आप और दूसरी चीज जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्लेज में जो आपको नजर आएगी, कैरेक्टर्स में ग्रे बहुत है। आपको हर एक में डायलेमा नजर आएगा, जो कि हम इंसान है ना, हम हमारे अंदर ही है, ये महव है। दैट इज हाउ वी आर, वी टेक डिसीजंस, वी मेक मिस्टेक्स, वी लर्न फ्रॉम देम, समटाइम्स वी डोंट लर्न फ्रॉम देम। सो वो एक प्रोसेस है जो आपको नजर कुछ भी नहीं होता और कोई इंसान नहीं होता। हाँ, तो यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट आपको नहीं नजर आएगा, यहाँ पे कैरेक्टर्स में एक, और जो हमारे, हम हमेशा ये करते हैं कि हम हर कैरेक्टर की आंख डालते हैं कि उसने कहाँ से कहाँ जाना है, ताकि उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शंस तो आएंगी ऑफ कोर्स इन देमसेल्व्स, बट कैरेक्टर की डेवलपमेंट में ना आए। So a lot of time we spent on that also. So कितना वक्त लगा इस ड्रामे को to put it together? ये जी हमने 2020 में 2021 में शुरू किया था. So it's been 2 years. Yeah, 2 years of development. Right. Yeah, and we, you know, all that process of finding the right people to work with us, the script, and the script went through many iterations, जो कि हर बार होता है. But like I said, we had to develop the script as we went along. बिल्कुल. So और सबका input लेके. So that's, you know, it took us 2 years, and that's the average. 2.5 years is what it takes us, because we want to get the whole project aligned and well put together, and make sure we don't compromise on the production values either. अब जब हो रही थी सारी प्रोडक्शन इसकी, तो कास्टिंग, who played a role in the casting? उस पे भी जी it's all mutual. So we had Nadeem input, we had Six Sigma की टीम थी, हम थे, हमने बैठकर हर एक पे रिव्यू किया, कुछ सजेशंस उनकी थी, कुछ सजेशंस हमारी थी, कुछ हमने सोचे भी नहीं हुए थे कि एक्टर हम उस रोल के लिए इस्तेमाल करेंगे, but then we had a lot of back and forth, and I think generally I'm very happy with the cast. They've done a
wonderful job. It's a And great if you'd cast. been to see the shooting, Hmm. एक माहौल ही था वहाँ हाँ. कमाड्री का और एसोसिएशन का, और वो एक फैमिली बन गए हुए थे. हाँ. They were all in this हवेली जिस जहाँ पे शूटिंग हुई थी. Everybody was so well connected, and there was a lot of love flowing around is what one felt. I can imagine. I mean, there's so much to look forward to. जो आखिरी teaser हमने देखा with Babar Ali and Venize, वो ही इतना interesting लग रहा है, you know, कि हम लोग जो सोचते हैं कि एक उम्र पे एक romance या एक stage of life, वो you're breaking those boundaries as well. So I'd been wanting to do this show कि love has no age. बिल्कुल. Really. क्योंकि हमारे ड्रामों में तो यही होता है ना कि 21 साल का लड़का है तो 20 साल की लड़की है, और वो रोमांस का भी क्या, आई मीन इट्स लाइक बस मर जाओ, एक मर्द पसंद आ गया तो मर जाओ बस. सब कुछ जो है अपनी जिंदगी का दांव पे पसंद आता है. हाँ बिल्कुल. उसका हाथ पसंद आ गया तो बस फिर तो आप वो इश्क हो गया, you know what I mean. But that's not reality. No. And life teaches you a lot of lessons. I mean those are hard lessons. So love we feel have no boundaries, लेकिन हम अपनी स्क्रीन पर नहीं ये दिखाते कि 50 साल की खातून है तो वो भी, उसके भी जज्बात हो सकते हैं बिल्कुल, और उसकी भी डिजायर्स हो सकते हैं, एंड शी कैन आल्सो हैव रोमांस इन हर लाइफ. मुझे कभी-कभी लगता है कि हमारे लॉज जो हैं वो इतने रिग्रेसिव नहीं हैं औरतों के लिए, लेकिन हमारी सोसाइटी नहीं आगे बढ़ती किसी तरीके से, और उसके लिए एजुकेशन का फुकदान है. आमना unless or until we educate people, things are not going to change. I mean, look at Bangladesh. बिल्कुल. They changed. They were, as we all know, they were considered to be the basket case of development. But if you look at them today, what did they do? They empowered their women. Yeah. They educated their women and their society. बिल्कुल. And they gave, they economically empowered people through access to credit. And you would know because you worked so closely with them, and I think your first the start of your entire career was by a Bangladeshi microfinance bank, है ना? So आपने काम किया उनके साथ, मगर वही बात है, वो बहुत आगे चले गए हैं. जी. मुझे ऐसा लगता है. जी वो हमसे तो बहुत आगे चले गए. पर हाँ देखें, एजुकेशन बेसिस है. अगर आपने चेंज लाना है, ट्रांसफॉर्मेशन लानी है, तो वहीं से आएगा. जी. Absolutely. Back to Kuch Ankahi. Interesting again character, going back to Babar Ali and Venize Ahmed's character. वो हमने एक टीजर देखा. फिर रुशाना, आपके जितने ड्रामे होते हैं, मैं आपके ही ड्रामे कहूँगी क्योंकि ऑब्वियसली ये आपकी पैशन प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें म्यूजिक का भी बहुत एक अहम रोल होता है. उडारी में भी हमने देखा, एंड ऑफ कोर्स आखिरी स्टेशन में, दिल ना उम्मीद में you also went back to singing. Yes, I did. Yeah, that was fun. I actually enjoyed that OST a lot. है ना? वो अच्छा था. मजे का था वो बहुत. मजा आया था. अब do you sing in your personal life? Off and on, but not really regularly. I should have continued it. It's something was my first passion, and I put in 7-8 years of life learning music with my grandmother. So I was lucky that way. I had a maestro. Of course, वो मैं तो I just when people say आपको म्यूजिक के बारे में पता है, मैं कहती हूँ मुझे तो बहुत कम पता है, because for music you need a whole lifetime to understand it, and so I just did that part. मगर किया आपने कभी रियाज या सीखने? जी मैं करती रही, फिर कोविड हो गया, फिर उसके बाद I got lazy तो मैंने किया नहीं, but before I did ये OSTs, all the OSTs I was practicing at that time. You were practicing? Yeah, अब मुझे 2 साल हो गए since COVID मैंने नहीं किया, so I don't know what the state of my vocals is, but yeah. So what role does music play in Kuch Ankahi? So इसमें it's not center because पहले तो हमारे हर प्रोजेक्ट में हम इस पे बहुत करते थे. इस बार आजान ने हमारे लिए किया, so it's lighter because वो देखिए इसकी टोन जो थी वो बहुत डिफरेंट है. So we needed to do something very different. So we've got it's younger, it's more hip, it's lighter in its substance. So it's more fun. It's an everyday music that you would hear while you're driving your car. That's the kind of music that we have this time. Nice. And Azan is so talented. He is. Azan is so spectacular. Yeah. I mean, he's done such good OSTs. Abhi unhone Ishq Ke Ilaka bhi kiya tha. Fantastic title track. So looking forward to that as well. How difficult was the shift from being very sober and sensitive to bhi hoga, but a very sober form of storytelling to comedy? Were you nervous making that shift? Definitely. मैंने कहा आपको शुरू में कहा था, this was a huge risk for us. The first kind was easier because you see, like I said, this is something I do every day. I was just today in Karimabad talking to women, and you hear their stories. So this was an easier story. The earlier ones were easier stories to tell. This was hard because this was you didn't even, I mean, for us, to get the right essence of comedy was important. Balance कहाँ से करें? Serious को, message को, comedy को, romance को.
So there were a lot of balls in the air. और trivialize भी ना हो जाए कोई मैसेज बीच में. हाँ, बीच में वो गुम ना जाए. So जाए. ऐसी कॉमेडी हो जो कि उसको एनहांस करे, उसको पुट डाउन ना करे. Absolutely. So वो भी उस लेंस से भी देखने की जरूरत थी. कोई कैरेक्टर कैरिकेचराइज ना हो जाए. जी बिल्कुल. कोई मैसेज, कोई सब्जेक्ट ट्रिवियलाइज नहीं हो जाए. जी कॉमेडी में हो सकता है. जी बिल्कुल. और डार्क की तरफ भी ना चला जाए कि लोगों को लगे कि ब्लैक कॉमेडी चल रही है. So it had to be the right balance of comedy. So again I'm going back to Ahmed Saab. Every time I would call him, he'd say, don't tell me, don't talk to me, don't tell me what's wrong with the episode I sent you. So, you know, his first reaction would be, you're going to criticize it and, you know, so tear it to shreds. But then I would say, no, Ahmed Saab, this was really good. Just a few pointers here or there, isko modulate kar le. So he was very good at taking that feedback and understanding. So we were able to gatekeep many things and get that, and then we would debate कि ये अगर ह्यूमर जा रहा है तो ये किस तरफ जा रहा है, इसकी क्या जरूरत है, या अगर ये स्टोरी लाइन हम दिखा रहे हैं तो ये क्यों दिखा रहे हैं. तो he was very good about that, and very every time we gave him feedback he was very positive about it. Right. So I think generally, as I said, these are very cooperative projects. एक बंदे का तो नहीं होता. एक बंदे का नहीं होता. रोशाना, पिछला जो प्रोजेक्ट था दिल ना उम्मीद तो नहीं, that was, I would call it an art house project, because ये वो ड्रामा था, मेरे ख्याल है बनाते हुए भी आपको ये ख्याल होगा कि शायद बहुत ज़्यादा लोग इसको ना देखें या पसंद करें, because वो उस तह तक जा रहा था कि यहाँ लोग अनकम्फर्टेबल फील करते हैं इन चीज़ों के बारे में बात करना भी. सेक्स ट्रैफिकिंग, बहुत लोगों ने कहा भी ये पाकिस्तान में कहाँ होता है. They're not even ready to acknowledge that these things are happening in Pakistan. कुछ अनकही को लेके आप पे ये प्रेशर है कि in one part of your mind you feel that this should be a commercial success? Are you looking at that at all? Amna, that's not the hat we wear when we design a project, because that's not really what we want to do. But somehow the expectation to har project se hoti hai कि, you know, people, हमारा क्या है, we want people to watch it and we want people to discuss it. Yeah. So the idea is to shake ourselves up and say, you know, why do we behave a certain way? What do we need to change? What impact is this having on society? And what is the path we must follow to bring about that transformation? Bilkul. So for us, it's more about starting that dialogue. It's about getting people engaged. Bilkul. So हमारे लिए तो engagement बहुत important है. इसलिए वो channel को select करना भी बहुत important हो जाता है. चैनल्स पे आ जाते हैं जहाँ पे एंगेजमेंट हो. अब चैनल्स पे आ जाते हैं. तो आपका पहले सवाल का थोड़ा सा जवाब दे दूं कि आई थिंक इसमें जो नॉवेल्टी है, क्योंकि ऐसा अभी कोई स्टोरी चल नहीं रही है, ऐसी कोई प्ले है नहीं हमारे यू नो ऑन अदर चैनल्स, और बहुत अरसे से आई नहीं. वी ऑल नीड टू लाफ, यू नो, इन सच टाइम्स, इन सच, हम अभी कोविड से निकले हैं, फिर फ्लड्स आ गए, फिर हमारे और मसले चल रहे हैं. So let's entertain ourselves, but let's also do some thinking, some hard thinking. Absolutely. So that's the right, I hope we've got the right combination, that people will laugh, they will enjoy it, they will be entertained, but they will also think and also reflect. Laugh at the right things. Right. है ना? ये भी है. And also watch because of the right messages or the right kind of storytelling. Because आजकल जो टीवी पे हम देख रहे हैं कि जितनी violent stories हैं, which are I think dangerous stories to tell, उनकी सबसे ज़्यादा ratings और सबसे ज़्यादा viewership है. और channel producers ये कहते हैं कि जी अगर जब तक औरत को थप्पड़ नहीं पड़ जाए तो उस episode की rating नहीं आती, और जब पड़ जाता है तो it skyrockets, and that's so disturbing to even think, you know, what kind of people are we? Okay, we take pleasure from watching women being you know, abused. But coming to the TV channels, different channels पे आपके different projects जो हैं वो release हुए, publish हुए, तो are you choosing or approaching the channels, or are you according to the story, or are the channels coming to you? What is the relationship? So it's basically according to the story, the last thing that you said. So whatever theme it is, whatever subject it is, that's how we then approach the channel. Right. So for example, Dil Na Umeed To Nahi, we wanted to have it on PTV. Okay. So हमारी उनसे भी बात चली, and then we also thought, अच्छा PTV तो terrestrial channel है, तो अब हम ATV1 was also, you know, both of them were then aligned on taking it forward. So it really depends on the subject and what we are trying to do. This one was an easier subject matter to promote, so to speak, because everybody wants a good story, everybody wants a good romance, everybody wants a lighter tone. So this was a easier, and we had worked, for example, ARY and आखिरी स्टेशन पर भी हमने मिलके काम किया था. So we know them and they trust us. I mean, the good thing is that अब जब कश्फ का नाम आता है तो people
अंडरस्टैंड कि इसमें बहुत टाइम लगा होगा, इसमें बहुत थिंकिंग गई होगी और इसके प्रोडक्शन वैल्यूज भी अच्छे होंगे और टीम ब्रांड अच्छी वैल्यू एब्सोल्युटली देयर इज वेरी वेरी हाई एक्सपेक्टेशन जी और ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है कश फाउंडेशन की। अब ये है कि ये कोई भी ड्रामा आएगा, कहानी आएगी तो उसमें सब्सटेंस होगा। एब्सोल्युटली, एंड क्रेडिट गोज टू यू, आई फील। टू द टीम वर्क है एब्सोल्युटली, बट क्रेडिट गोज टू यू फॉर हैविंग दैट थैंक यू विजन कि ये एक प्रोजेक्ट बनाना है और इसका ये फायदा होगा सोसाइटी को, not to bank balances, and because it's a business at the end of the day. राइट It is, right? राइट Drama production is a business at the end of the day. So yeah, so ARY के साथ आपने आखिरी सेशन भी किया था, जी and Udari was with Hum हम TV. टीवी जी आपने कहा दुखती रह गए, तो वो क्यों है? क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसमें टू गेट द Hmm, चैनल ऑन बोर्ड, बट आई गेस दे हैव देयर ओन वेज ऑफ looking at things and sounding board, so उनके कई levels हैं, tiers हैं जिनके through जाना पड़ता है, बिल्कुल. so it's not an easy process. That's some of the things that you need to learn, and every channel has their own SOPs and their own बिल्कुल. their own go areas and no go areas. Hmm, तो वो समझने में बहुत देर लगती है आपको. But after a while, now having worked with so many channels, I think I can write a manual on this, on how to work select, with how to work, how to work with all the channels. Yes, That's a yes, specific channel. yeah. Absolutely. कुछ अनकही, अनकही. हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं. इसका नाम बड़ा मुश्किल था ना. कुछ हम अनकही, अनकही. मैं हाँ, सोच रही हूँ बिकॉज ओरिजिनली आपका था, जी इंटेंशन ये थी कि हसीना मोइन जी लिखेंगी और अनकही किसने नहीं देखा, किसने नहीं उसको अप्रिशिएट किया. हम्म, इट्स वन ऑफ दोज क्लासिक्स दैट हम्म, वी लव गोइंग बैक टू इवन नाउ. हम्म, और हम कहते हैं काश को अच्छा प्रिंट उसका मिल जाए, बिकॉज नहीं मिलता. हम्म. बट है कोई रिलेशन है दोनों में? मुझे लगता है कि हसीना आपा ने हमें ये नाम भेजा. वी वर स्ट्रगलिंग सो मच. एवरीबडी वी वुड कम अप विद नेम्स एंड समहाउ द अदर वो टर्न डाउन हो जाता था. 2 साल से हम ट्राई कर रहे थे हाँ. एंड नो नेम वाज फिटिंग. बाकियों के नाम आसानी से आ गए, एटलीस्ट रिलेटिवली आसानी से आए. इसका नाम आ ही नहीं रहा था, फंसा हुआ था. हाँ. कभी हेमत साहब कुछ कहते थे, कभी सिक्स सिग्मा वालों से आता था, कभी नदीम कहता था, कभी हम कहते थे. ब्रेनस्टॉर्मिंग कर करके आ ही नहीं रहा था. And then one day Ahmed Saab sent me a text and said, Kuch Ankahi. And I said, yes, that works. That works. Because इस कहानी में भी बहुत कुछ है जो कहा नहीं गया. Hmm. वो नुआंस्ड है. Hmm. आपको समझना पड़ेगा. Hmm. बहुत सी चीजें हमने, और जिंदगी में भी ऐसा ही होता है. Hmm. आप बहुत सी चीजें कह नहीं पाते लेकिन फिर भी समझ जाते हैं. तो इसमें आपको occasions नजर आएंगी which will make you understand why the name. Or I mean, even it's also in a lot of times women don't say things that they mean or they want to say. I mean, a girl, if she wants to go to college, she may not be able to say that because she's not allowed to say that. So बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी ड्रीम्स हैं. अगर आप उसको उस हवाले से देखें, होप्स एंड ड्रीम्स के हवाले से देखें, तो बहुत सी चीजें हैं जो हम नहीं अचीव कर पाते बिकॉज माशरा हमें नहीं करने देता है इसमें. मगर कुछ चीजें हैं जो हम कह नहीं पाते लेकिन दूसरे समझ भी जाते हैं. खूबसूरती तो यही है. हाँ. आई थिंक ह्यूमन रिलेशंस की खूबसूरती तब ही बनती है जब आप बगैर कहे कुछ अगले को कन्वे करते हैं. तो ये आप देखेंगी, मैं कुछ बोलूंगी नहीं कि कहाँ पर ये होता है और कैसे होता है. हाँ. So it's story line में आपको मैं नजर सोच रही हूँ कैरेक्टर. कि शुक्र है कुछ तन्हाइयाँ नहीं थी. वो भी थोड़ा सैड हो जाता. वो थोड़ा सैड हो जाता. ये थोड़ा इंट्रीगिंग है. लेकिन मुझे लगा शायद हसीना आपा लिख गई थी, नाम दे गई नहीं, थी. मुझे लगता है इन्होंने भेजा है हमें नाम, बिकॉज हम इतना उनके बारे में बात भी कर रहे थे while we were writing it अपने तौर पर, and then somehow it just clicked. And so here we are, and everybody agreed to it instantly. It was, you know, it's like ये नाम सही है, ये बैठता है. बड़ी इंटरेस्टिंग है रुशाने आपकी सिलेक्शन भी, कि आप डायरेक्टर्स के साथ भी डिफरेंट डायरेक्टर्स के साथ काम करती हैं. ऐसा नहीं है कि यू चोजन योर फेवरेट एंड यू कैन कीप डूइंग ड्रामास विद द सेम डायरेक्टर. आमना वो तो काशिफ निसार, मेरीन जब्बार, एब्सोल्युटली, एहतशामुद्दीन फरदारी, एंड नाउ नदीम बेग. जी, इट्स द जॉनरा. आप एक देखिए, वो मैं ऑफ्टन आई वंडर जब मैं ये नेटफ्लिक्स की प्रोडक्शंस देखती हूँ, फॉर एग्जांपल गेम ऑफ थ्रोन्स, एवरी वन वाज मेड बाय डिफरेंट डायरेक्टर. एब्सोल्युटली. और वो ये कहते हैं कि फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि जो एपिसोड में जो भी अगर एक्शन है तो फिर वो उस डायरेक्टर को देते हैं जो एक्शन कर सकता है, अगर ड्रामा है तो उसको देते हैं जो ड्रामा कर सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो हमारे साथ भी यही रहा है कि वी हैव टू गेट द डायरेक्टर हु फिट्स इन विद द पर्टिकुलर स्टोरी दैट यू वांट टू रिलेट, हु कैन लिंक टू इट एंड अंडरस्टैंड इट. So in this case, as I said, Nadeem was just the right choice in an instant for us. Like Ahmed Saab was the right choice to write it.
So I think that that's how, and we spend a lot of time on these things. It's not that, like you said, it's not about working with the favorites, and all of these are fabulous directors. बिल्कुल. I've had such, I mean, if मैं इनकी तारीफें करना शुरू तो फिर हमारे 3-4 प्रोग्राम्स लग जाते हैं. हाँ. बट मेरे ख्याल से पाकिस्तान में टैलेंट का फुकदान नहीं है, कमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ना एक्टर्स की है ना डायरेक्टर्स की है, but stories nahi hai. How the way we are telling stories, like you said, is not. I think it's dangerous actually, because television एक ऐसा medium है, it influences millions of people. और अब तो अगर views भी आप देखें YouTube पे भी, तो they're running into millions. कुछ ऐसे ड्रामे हैं जिनकी billions से ऊपर views है. I mean, there are 7 billion people in the world. और अगर बिलियन से ऊपर व्यूज एक ड्रामे के जा रहे हैं तो that influence is huge. मगर आप उस इन्फ्लुएंस के साथ कर क्या रहे हैं, वो काफी ट्रैजिक है. बिकॉज पिछले 6 माह में तो कोई शायद ही कोई ऐसा ड्रामा हो कि आप देख के कहें कि यार ये बहुत there's पिंजरा which is very responsible and absolutely which we're really enjoying for the message that it's putting out. Otherwise it's very very violent. I know, and regressive इतना regressive है कि Absolutely. बस हम अपने पता नहीं औरतों और के साथ सारी क्या करना regression, सारी violence जो है वो औरतों पे ही आके गिरती है. तो और दूसरा वो ब्लैक एंड व्हाइट जो कैरिकेचर हम कर रहे हैं कि बस या तो आप बहुत बुरे हैं या आप बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि बस आप शैतान हैं या आप फरिश्ता हैं, बीच में कुछ है, इंसान नहीं है आप. इंसान हमने छोड़ दिए हैं लिखने. तो बहुत उम्मीदें हैं. रोशानी, how many episodes? 25. Will it actually be 25? या आजकल ड्रामों के साथ ये भी बहुत हो रहा है कि फ्लैशबैक्स वो डाल के और चैनल्स खींच देते हैं. क्या पीछे जाके देखें हमारा कौन सा ड्रामा जो है हमने इसको ड्रैग किया. So no, 25. And so 25 is a good number of months to enjoy. Looking forward to it. I'm sure हसीना आपा ऊपर से देख के बहुत खुश होंगी. जी, I hope so too. I hope so. Yeah, I hope she won't. I hope we don't disappoint her. I'm sure you won't. We are really looking forward to it. This weekend release ho raha hai with I would say a star production team, starting with Kashf Foundation and going to Six Sigma. Has a good reputation as well, although they've done some dubious work. Dubious in the sense that some not so great, but a lot of good work as well. Right. And Nadeem Beg is such a visionary when it comes to direction. Mohammed Ahmed Saab, and of course the star cast. Lots to look forward to. Is there anything that you'd like to share that we haven't so far spoken about? No, I think we've covered a lot. We've covered it. Yeah, in this Kuch Ankahi curtain raiser. And ये तो मैं वहाँ जाऊँगी ही नहीं कि आगे आप क्या सोच रही हैं, because ये बहुत ज्यादा वाला सवाल हो जाएगा कि अच्छा अगला project क्या होगा. लेकिन this is your 5th project. And अल्लाह करे आप बनाती रहें. One of these days I will retire though. No. We will not allow you to retire, because this is something you have nailed. You have nailed it, and I hope you inspire other people to write similar stories and in a similar manner, with the kind of dedication and devotion and precision that you bring to the क्या कहते हैं, drafting board. Roshani, thank you for your time. Thank you. And thank you for sharing your story and all the stories of all the women that you have portrayed in these dramas. Like you said, they're all real stories, जिनको कि थोड़ा सा modify करके screen के लिए adapt किया जाता है. I hope औरतों की भी अच्छी कहानियां और खुशी. हसीना मूवी ने तो ये कहा था ना, और strong women characters दिखाएं जो अपनी voice इस्तेमाल करनी आती हो, जिनके पास कोई agency हो, जिनको अपने हकूक का पता हो. It's so important to see. And there's nothing wrong in that, Amna. I don't know why we consider this to be such a taboo कि भाई एक औरत की आवाज आ जाए. क्यों ऐसा क्यों है? बस वो हमारी पेट्रियार्की इतनी ingrained है, और ये औरतों में भी है. I mean, women are equally patriarchal. I always say. हमें खुद से अपने आप को भी question करना है और एक आईना दिखाना है. And I think lastly, like you also said, it's every project that we do, there's a message of hope. And the hope is within us. We have to change ourselves first. I hope women watch this drama and find that hope within themselves, and they find the agency and the voice to understand their rights and then speak out for them. Absolutely. And men need to also change. And the way they view women. Absolutely. And the decisions they take. Absolutely. Roshani, thank you so much. It was delightful talking to you. As always, पिछली हमारी interview Zoom पे थी. This was so much more better. Thank you. And looking forward to it. I will be calling you with feedback after the first episode. Great. Thank you. Thank you. Wonderful, Amna.